Hello everyone, welcome to OASHUB. So, आज इलेक्शन रे भारत रत्न देखा this year, the 2023 and the 2024 the Bharat Ratna, and this lesson would be significant for you as the upcoming different competitive exams like OPSC, UPSC, all the state PCS across the India, and that means let's say the SSC as well, bankings, RB exam, all these exams they ask this kind of questions, even UPSC also. So let's look and understand the Bharat Ratna, the prestigious awards and the most and the highest awards of this land, the sacred land of India, the Bharat Ratna. So Bharat Ratna jitra ame katha ko ke when we talk about the Bharat Ratna, it was that one is instituted in 1954, that is epitomize the India's recognition of the exceptional service contribution across the diverse field. So Bharat Ratna jodi ame dekhiba, so the best awards, that means this is not title, this one is the awards, is given to the best services of the exceptional services the peoples across the society of India has done for the nation. The nation ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଯିଏ ବି କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ କୌଣସି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜବ୍ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ, that would be the what personal milestone for the nation. To say personal milestone for the nation, that could be from the literature, from the sports, from the politics, from the scientists, from any other field. तो से मन को कौन कहे भारत रत्न अवार्ड्स दिया जाए ना. दिस वन इज अवार्ड, दिस वन इज नॉट टाइटल. सो दैट इज वाई ना दिस अवार्ड्स इज कन्फर्ड एथिपाई कन्फर्ड करा जाए, सो दैट टू मार्क देयर कंट्रीब्यूशन, देयर सैक्रिफाइस for the nation. सेमनको जो sacrifice हम कहबा, and this is what that I would say the nation's progress and embodies the spirit of meritocracy and inclusivity. These two words is very key words, meritocracy and inclusivity. That means when I talk about the inclusivity of the Bharat Ratna, that talks about that all the sphere of the society, irrespective, that could be from the tribal background, that could be from the any length and breadth of this nation, from I would say from the defense to the literature, all the fields, jahan bhi hamara fields ase, all the fields all across the nation hame कहबा समस्तों को ये कौन करा जाए awards is not confined to any like the political section, or this one is let's say social service like Mother Teresa. Even the outsiders, I would say this awards is also given for the foreigners as well, for the exceptional contribution for the worlds. ये तुम्हें रविंद्रनाथ टागोर कथा नहीं जो, और आई वुड से द पॉलिटिशियंस कथा नहीं जो, ये पॉलिटिशियन मन कही पर दैट कुड बी जेमती हमें कहबा, और लेट्स से साइंटिस्ट पे ही पर दैट कुड बी फॉर द साइंटिस्ट है पर, फॉर द पॉलिटिशियंस है पर, फॉर द लिटरेचर है पर, फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन है पर, फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल, and the social service, every filter दिया जाए. And the Bharat Ratna जदि हम देखा the highest form of the national appreciation, कहार गोटे जदि हमें contribution को जदि highest appreciation करवा, that to be in form of the Bharat Ratna, the highest awards. nation building रे जो मैंने काम करचंती, नेशन को हाईएस्ट लेवल रे पहुंचे पे जो मैंने काम करचंती, जो मैंने मतलब हमें कहवा के डेडिकेशन जोटा अनपैरेलल डेडिकेशन देखिचंती देश को आगो को नवा देशर ना डिफरेंट फील्ड रे रोशन करे बारे. फॉर एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स सचिन तेंदुलकर को जमी भारत रत्न दि जाइए, तो भारत रत्न किए दे था साधारणतः आम कह प्रेसिडेंट, तो दैट टाइम्स तुम देखिपार प्रणब मुखर्जी दौरान क्या सचिन तेंदुलकर को द ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया ना. ये जो भारत रत्न दिए थे कौन थाए ना, ए गोटे तुमको कौन थाए सिंपल आम कह गोटे कौन दैट इज गोटे मेडल जो मेडलटा तुम ये देखिपार, हियर यू कैन सी द मेडल्स दैट विल हैव टू साइड मेडल, गोटे साइड अशोक चक्र अशोक स्तंभ सॉरी आउ गोटे साइड तुम चक्र अशोक स्तंभ आ गोटे चक्र तो बोथ साइड लीफ दीटा ये हूँ आमर जहाँ कहुए अस्तपत्र है ना. तो सेप रही देख इट्स मेटाल बेस्ड, ये गोटे मेटाल रही आग को देखा है ना. एंड ए कौन चाहिए देख ये सो दैट इज व्हाट द रेसिपिएंट बेस्टर्ड विथ ए सर्टिफिकेट साइन बाय द प्रेसिडेंट.
symbolizing and a medallion symbolizing their exemplary service. तो इथरे किछि पैसा न थाए. So there would be a medal रहिबो and that acknowledged the highest level of contribution for the nation building. President sign करते गोटे letter थाए. Does not include any monetary grant. इथरे किछि पैसा न थाए. Because this is not for the what आमे एथिपई contribution दो नहीं. Not to focus on the money. So this is not to focus on the money. This is the focus on the service has done for the nation building. तो एथिरे बेनिफिट्स कौन थे जो मैंने साधारणतः भारत रत्न विनिंग अवार्डीज थाए से मन को ऑल द आम कहवा मतलब डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ द मॉनिटरी बेनिफिट से मन को बहुत प्रिविलेज थाए जमते कि दे वुड बी लाइक द डिग्निटरीज दे वुड बी कंसिडर as what VIPs एमन को VIPs रे कंसिडर करा जो दे विल हैव द व्हाट accessibility to the diplomatic passports, facilitation of the scene travels arrangement across the nation, lifetime fly executive class with no cost, that would be also from the government of India arrangement kara jibo, placement in a prominent positions in the table of the presidents reflecting their esteem status. तो मन को बहुत बड़ा पोस्ट गोटे रखा जाए पारंती गवर्नमेंट रे. यूनिवर्सल ऑनर्स दिस इज नॉट द नेशनल ऑनर, ये कौन सी नेशनल ऑनर नुह जमती बाबा साहेब अम्बेडकर कथा नहीं जब आमर लेट आम कह प्रेसिडेंट एंड द साइंटिस्ट द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया ए के अब्दुल कलाम कथा नहीं जाओ, इवन नेशन बिल्डिंग रे पटेल कथा नहीं जाओ, इंदिरा गांधी कथा नहीं जाओ, मंडेला कथा नहीं जाओ, दैट मीन्स आम कह आमर लता मंगेशकर कथा नहीं जाओ. तो ऑल दिस सेलिब्रिटीज मैंने अच्छा यूनिवर्सल एलिजिबिलिटीज रही मतलब ना कि खाली इंडियन मन को दिया जाए. ताली ये रत्न भारत रत्न किए किसी बोर्ड अच्छी कि नहीं. साधारणतः बाय कन्वेंशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेकमेंड करती प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट से को एक्सटेंड कर दिखती बाय फॉर्मल रिकमेंडेशन नॉट रिक्वायर्ड सेमती किसी नहीं. साधारणतः प्राइम मिनिस्टर तांकर डिस्क्रिशनरी रोल थाए तो सी जहाँ कहे से कर दिखती. दैट इज वाई साधारणतः एवं जानते कि जितर आमर एम एस स्वामीनाथन कथा नहीं जाओ कि आम कह आडवाणी कथा नहीं जाओ और लेट से आम कह नरसिम्हा राव कथा नहीं जाओ जो एम को दिगला कि फैमिलीज देयर फैमिलीज they were showing gratitudes to the PMs because the discretionary lies on the PMs for the what choosing the person. And this year, 5th awards has been given. ये वर्ष 5 छोटे दिए जी स्वामीनाथन, चरण सिंह, नरसिम्हा राव, आडवाणी, कपूर जी, तो 5 जन को दिया जी. दैट इज बट कर्पूरी जी. तो एमान को जो दिया जाइए दैट मीन सोशल जस्टिस पई रही, लीडर पई रही, देख लीडर पई रही. देन आम कह इकोनॉमिस्ट इवन इकोनॉमिक्स फील्ड टू फील्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, फ्रॉम द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस, फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, फ्रॉम द फील्ड ऑफ फार्मर्स. तो ये सबुठ इंपोर्टाट था ए वर्षर जो भारत रत्न कि डिफरेंट फील्ड को दिया जाए. एग्रीकल्चर कथा नहीं जाओ, दैट वुड बी डेमोक्रेसी एंड मतलब ये पॉलिटिक्स कथा आम कह, तो इकोनॉमिक्स कथा नहीं जाओ, एग्रीकल्चर कथा नहीं जाओ, सोशल जस्टिस कथा नहीं जाओ. तो ये जो भारत रत्न ए वर्ष थिला ना जोटा कि आम कहते कि इनक्लूसिविटी दैट वाज प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड एंड अक्रॉस द आम कह पार्टीज को जाकि पार्टीज ऊपर को जाकि डिफरेंट बैकग्राउंड रो लोक को चूज कर बहुत बढ़िया था. दैट वाज द व्हाट दैट रियली इम्प्रेस्ड. तो सिंस 1994 जदि आम देखा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दि जाऊँगी, मैक्सिमम 3 अवार्ड्स दि जाऊला कि 2 वर्ष 5 दि जाइए भारत रत्न. तो साधारणतः भारत रत्न यूज ऑफ भारत रत्न एज ए प्रेफिक्स और द सफिक्स टू नेम्स इज प्रोहिबिटेड आज आर्टिकल 18E ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स करे सेमती लिखि परिबो नहीं. बट हाँ कौन से गोटे सभारे संबर्धना करबा से केस रे आम यूज करते. बट ध्यान से सुनियो भारत रत्न इज नॉट टाइटल, दिस वन इज नॉट टाइटल, दिस वन इज रिवॉर्ड. This one is what reward, not title, because Indian Constitution Article 18 prohibits any such of what title. ये भले जो title को जमती कहते मतलब prohibit करे, but rewards are not prohibited. That is why हमें ताको prefix and suffix रे यूज करी परिबा नहीं. नाउ जदि हमें देखिबा द स्पेसिफिकेशन ऑफ भारत रत्न रे कोन थाए. साधारणतः भारत रत्न रे दुईटा चिन्ह तुमको देख, गोटे साइड रे तुमको अशोक चक्र देखा गोटे अशोक स्तंभ देखा. तो बोथ साइड बोथ लाइक गोटे साइड रे जो पड़े तुम लिखाई स्तंभ अच्छी से सत्यमेव जयते लिखाई एंड दैट इज व्हाट भारत रत्न गोटे साइड लिखाई था. तो साधारणतः जो गोल्ड इज बट सर्कुलर गोल्ड मेडल एडर्न विथ सन
and a people live saved added with the sun and the people live saved rohichi national emblem crafted in platinum added on the reverse side of the medal bearing the national motto satyame jayate तो गोटे सन रही तार जोटा अशोक चक्र भाया गोटे सन तुमको देखा प्रथम सैड्रे जो भारत रत्न रही तार अपोजिट सैड्रे आमको देख नेशनल एम्प्लेन सत्यमे जयते दैट मीन्स द ट्रूथ विल प्रिवेल्स and the Alipur कोठी तैयारी हुई ये the medals are produced in the Alipur Mint Kolkata which also manufacture other prestigious national awards as well तो ये टिके मन रखी परिबे that means कोलकाता अलीपुर एरिया से तैयारी करा जाए it's metal based now awardees are that means the legacy जति हमें देखिबा we are having good legacies among the individuals मानको दिया जे from the different fields from the sports from the music from the scientist from what I would say social services, from the music, from politics, from every spheres that they make national and the global recognition there is humanities by music by the different legacy roiche that is not. I'm a conclusion that Bharat Ratna represents the pinnacles of the national recognition and celebrating the individuals. तो ये तुमर आम देखा कि भारत रत्न ना क्वेश्चंस केमती आसीपर कि भारत रत्न जदि आम पॉलिटिक्स जीव आर्टिकल 18 को लिंक कर किसी एमसीक्यू हो पार और तुमको कहुए कि भारत रत्न रे कौन सारा चेंजेस अच्छी डिस्कस करवा तार कौन रही प्रोज एंड कॉन्स और दिस मतलब ये सब ये अवार्ड्स जदि आम कहवा दिस अवार्ड्स आर व्हाट टू एनकरेज फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन हाईएस्ट लेवल ऑफ सैक्रिफाइस जो मैंने भी दि जाए and these are exemplary and the dedication to the nation's welfare. Okay, so with this I will end the session. Thank you everyone.